most important presentation. We request Government of India, Shri K.K. Dwivedi, who is the son of the soil, as to what we will do for the state of Assam. Thank you, my distinguished colleague. आजेर हमार मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, आजेर हमार मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, मंचत उपविष्ट विशिष्ट अतिथि हकल, यात उपस्थित ऑल इनवाइटेड गेस्ट्स और आमार मरमर छात्र छात्री हकल, आपना लोगक मैं এটা রিকোয়েস্ট করিছো আমার জি স্টুডেন্ট বিলাক আহিছে আপনা লোকে আলাপ বহি যাওক जी प्रेजेंटेशन मैं কৰিবলৈ গৈ আছো এটু আপনার বহুত কামৰ বস্তু আবার जी স্টুডেন্ট বিলাক আছে আপনা লোকে ভবিষ্যত কেনে কি অপরচুনিটি আহিব স্কিল ক্ষেত্ৰত কি আপনার সুবিধা পাব और কোড কোড আপনার প্লেসমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট জব অপরচুনিটি আছে তার উপৰতে আমি কিছু ক'বলৈ গৈ আছো এটু আপনার বহুত কামৰ বস্তু সেই কাৰণ মই অসমীয়াত আৰম্ভ কৰিছো আপনা লোকে ভালকৈ বুজি পাব और प्रेजेंटेशन जी आसे हेटू इंग्लिशत आसे हमारा जी इनवाइटेड गेस्ट आसे दे विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड सो अपने लोगों कारण मैं अखमियात आरम्भ करिছোঁ আগতে मैं एटा सरू फिल्म देखाबले विचारिছোঁ टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि स्किलिंग क्षेत्र की अपरचुनिटीज आसे भविष्यत की अपनार सुविधा पाब पारे और अपनी एटू सुविधा जी अपरचुनिटी आसे उपयोग करी अपनी निजर कैरियर केने डेवलप करिब पारे देश विदेशत गई केने जॉब करिब पारे और एटा प्लेसमेंट सुविधा उठाब पारे सो कैन वी हैव अ वीडियो प्लीज The future is today. Every movement, every act, every effort, everything we do today is a step towards a better tomorrow. A future that ensures we are better placed than ever before. It is the story of mankind from inventing the wheel to sending space missions to Mars. We have always strived for a better tomorrow. A tomorrow that gives us hope and at the same time poses challenges. Are we ready for it? Are we well equipped to meet the obstacles head on? Are we skilled to handle what the future holds for us? The future is today. Globalization, climate change and digitalization have given added thrust to the wheel of time. The world is going through a rapid transformation. We must be ready to face and adapt to these changes and challenges. We must be skill ready. With a vision to make India the skill capital of the world, Prime Minister Shri Narendra Modi in 2015 initiated its most ambitious venture, Skill India Mission. A network of 26,000 plus skill training centers spread across more than 700 districts of the country today is training more than 10 million youths annually to become qualified professionals ready to meet the future needs. It is because of this young workforce that India today is considered a preferred destination for establishing high-tech manufacturing units by international conglomerates. With a clear vision on where India will be on its centennial celebrations since independence and at the same time anticipating and responding to digitalization in manufacturing and service industry, India is ready with a digital roadmap for the next 25 years. Robotics, artificial intelligence, AR/VR, smart agriculture, electric vehicles, healthcare and automation are some of our focus sectors where our skilled professionals are ready to meet future needs. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship through its Skill India campaign has marked priority sectors in which the youths can explore skill training according to their interest and competency. India has the courage to turn dreams into reality. Economic progress of India has increased manyfold under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Ease of doing business has made India the most sought after investment destination. To
PM Gati Shakti is a national master plan for world-class modern infrastructure driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistic infrastructure. It has led to huge job and entrepreneurial opportunities for our skilled workforce. India is world's youngest country. More than 50% of its population is less than 25 years old. 62% of its workforce is younger than 35 years of age. Coming decade will witness millions of skilled youths finding their place under the sun. There's equal emphasis on upliftment of rural areas and empowerment of women. From apparel to aerospace, close to 50% women have been imparted skill training. In the agriculture sector, new avenues have opened up with organic farming, fishing, food processing and drone simulator training. Skill development translate to the emergence of qualified professionals who are ready to meet the future needs of the world. India has a clear skilling strategy, providing smart and skilled manpower solutions to the world. Our young workforce's competitiveness and innovation capacity is second to none. There is visible excitement among our youths to be a part of a success story called India. We invite the world to be a part of this story. Be a part of this new India. Capitalize on India's skilled resources to your advantage. After all, what the world needs in future, we have it today. Thank you. So, आपने लोग के Thank you. एटीए अभी गोम पाइशु कि यार तुम्हार यूथ बही आसे और स्टूडेंट छात्र छात्री बही आसे सो आपने लोग के सही से की अपॉर्चुनिटी आसे इन ऑल एरियाज इन ऑल सेक्टर्स वी नीड स्किल वर्कफोर्स इंडिया ओनली 3 to 5% वर्कफोर्स जी आसे स्किल आसे whereas in USA in Europe Japan Korea more than 95% जी मानो काम करे वर्कर बेलाग they are skilled आसे so huge opportunity किसी अगटे अपने लोग के सही से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ता क्षेत्र कोई से कि हमार किमान इंडिया आग बड़ी से बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द स्किल वर्कफोर्स और जी वीडियो अपने लोग के सही से ता बेसी भाग स्टूडेंट ITI पोरा सेम इंस्टीट्यूशन जोधपुर अपने लोग के यही से नाउ दे आर डूइंग lot of skilling in different sector अपनी सही से aviation and infrastructure and hospitality so इमान opportunity भविष्यत आही आसे are you ready to take this opportunity जेतिया अपना लोग के ready आसे तेतिया एटू हुबिधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट अपना लगत लो यही आसे I will just briefly run through few slides to give you perspective कि एटिया स्किल क्षेत्र की हुई आसे and what is our plan particularly for the state of Assam. As I said, now আমি যেতিয়া স্কিলের কথা কওঁ so skill is very critical element for economic growth and development. যেতিয়া skill করে দিয়া যায় then that enhances the productivity of individual, make them employable and overall যেতিয়া skill করে দিয়া যায় তেতিয়া that the entire economy become competitive. There's one study has been conducted by World Economic Forum in 2021 and found that if all the workforce can be upskilling जेतिया कोरी दिया जाए तेतिया additional 6.1% GDP growth बढ़िबो पारे so you can see the only skilling one element can change the entire economic landscape of the country. आला पगटे अपना लोग के सही से India is the youngest nation. एटिया हमार जी एवरेज एज आसे median age आसे Indian का that is 28 years youngest in the world. And out of this population 62% population is working age that means 15 to 59 years age group अटा से so we have the huge workforce और अपने लगे जेटिया ग्राफ्स आए in most of the developed countries the population is aging working population is going down. India has advantage and this advantage will go up to 2047. So up to 47 that is called Amrit Kal we have a demographic advantage. Now it is up to us
that how we can harness this potential. And particularly in Assam and Northeast, see the population of Assam, the median age is 26 years, less than the national. So there's a huge potential of skilling of youth in Northeast, particularly in Assam. अपने लोग के होने से sustainable development goal out of 17 sustainable goal जी United Nation adopt करी से there is a 191 countries adopt करी से कि by 2030 আমি এটু sustainable goal achieve করিম. Out of that you find that 5 sustainable goals are related to skilling. You can see how important skilling is. Now agar skilling iman important, then what is happening in the skilling sector? So I would like to give you perspective and the ek idea ki skilling ecosystem etia kene ase government of India ya in the country as a whole. There is a 5 vertical agar abhi jetia gotei skilling initiative ase divide kora jay tetia one is regulation. গোটেই স্কিলিং যি কোর্স আছে কারিকুলাম আছে টেনিয়ৰ আছে ইসে স্ট্যান্ডার্ডাইজ কৰিবলৈ এন্ড রেগুলেট কৰিবলৈ এনসিভিটি এটা আমাৰ রেগুলেটরি বডি আছে এটো 2018 সংগঠন কৰা হ'ল এস্টাবলিশ কৰা হ'ল এতিয়ালৈ 4500 স্কিল কোর্স এতিয়ালৈ এপ্ৰুভ কৰিছে সো ইউ ক্যান থিংক দ্যাট 4500 standardized skilling curriculum and course has been approved. You can choose any of the course जी अपना भाल पाए. प्रत्येक बसर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी मिलाए 1 करोड़ 1 कोटी यूथ प्रत्येक बसर अभी स्किलिंग करा जाए. और अपार्ट फ्रॉम दैट एज डॉक्टर चक्रवर्ती अंडरलाइन जस्ट फ्यू मिनट बैक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप উদ্যমিতা আপনার যেতিয়া স্কিলিং করা যায় তেতিয়া লগত এতিয়া আমি কৰিছোঁ কি ট্ৰেইনিং লগত আপোনালোকে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ শিকিব লাগে উদ্যমিতা শিকিব লাগে কি যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত স্কিলিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ বিজনেস কেনে আৰম্ভ কৰিব বিজনেস প্লান কেনে বনাব আপোনাৰ উদ্যম কেনে আৰম্ভ কৰিব লোন কেনে ল'ব এই গোটেই বস্তু শিকাবলৈ এতিয়া আমাৰ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ আপোনাৰ যে স্কিলিং কোর্স আছে তাত এমবেড কৰি দিয়া হ'ল. ITI अपना 1200 घंटा का जी कोर्स आसे तार मजद 120 hours we devote only for the entrepreneurship and soft skill या ऊपर दिया जाए तो बहुत गुरुत्व आसे दिया entrepreneurship लगते अभी industry is most important very critical so far the skilling is concerned. इंडस्ट्री को केने कनेक्ट करा जाए तार कारण हमार मिनिस्ट्री 37 सेक्टर स्किल काउंसिल प्रमोट करी से और जी SSC আছে কিছু সিও আজি ইয়াত আপনার লগত ইন্টারেক্ট করিব ইন্ডাস্ট্রি কি কাম হয় কি ইন্ডাস্ট্রি কি স্কিল লাগে এটু দেখতে লই আহে তার পিছত আমি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কারিকুলাম বানাও और এটা নোটিফাই করা যায় और তেতিয়া আহি আপনার ITI और যে শর্ট স্কিল প্রোগ্রাম আছে তার ট্রেনিং দিয়া যায় সো আপনাক হেতু ট্রেনিং আমি দিও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হেতু ট্রেনিং প্রমোট করে তার পিছত ট্রেনিং করা পিছত সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য জব এমপ্লয়মেন্ট इन द इंडस्ट्री. अदरवाइज ट्रेनिंग देखा गोल कमार ITI पूरा अबाउट 70% कैंडिडेट अपना लोग के 70% कैंडिडेट पास करा पिछत एटू जॉब पाई जाए 70%. नाउ वी वांट टू मेक इट 100% कि केने हमें प्रत्येक लोरस वाली जेने ट्रेनिंग करा पिछत प्लेसमेंट हो इंजीनियरिंग कॉलेज एन इंडस्ट्री आहिबो एंड दे विल कंडक्ट द प्लेसमेंट अपना इंडस्ट्री पूरा ITI पूरा एटू जॉब व्यवस्था करा जाबो. Apart from that, now we have focused on the international mobility. Etia ami eta 16 deshat 16 countries ami eta study korishu. We conducted a gap study. We found that there is a demand of 37 lakh candidates in different sector in these 16 countries. 16 countries ji demand ase su kene fulfill kara jabo tar karan ami international skill India international center banai aso. আখমা ডেটা সেন্টার হব তার আপনার লোকে যে ইন্টারেস্টেড আছে বিদেশত গৈ কাম কৰিবলৈ তাত আহি শর্ট স্কিলিং করক 3 months 6 month ট্রেনিং করা পিছত দেন উইল অ্যারেঞ্জ দ্য প্লেসমেন্ট তারপর আমি জব আনি এটু লোরা ছোৱালীক ফেসিলিটেট করা যাব সো দ্যাট দে ক্যান গেট দ্য জব আউট অফ দি কান্ট্রিজ য'ত আপনার স্যালারি অ্যাবাউট 10 times 20 times বেশি পায়. সো দিজ আর দ্য স্কিলিং ইকোসিস্টেম অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি. নর্থ ইস্টে যেতিয়া দেখা যায় ইয়াত about more than 2000 PMKY সেন্টার আছে 87 ITI আছে 17 JSS আছে और ইয়াত গোটেই মিলাই ডিউরিং লাস্ট 5-6 years এতিয়া লৈ about 13 লাখ ক্যান্ডিডেট স্কিল করা হল
Now we are expanding this network or 8 to 13 lakh candidate જે અમારા number હશે, we want to increase it manifold. જેને अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा आखमट और अन्य स्टेटेड वी आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेटअप न्यू ITI एंड अपग्रेड द एक्जिस्टिंग ITI. धरोक अपना ITI ऑटोमेशन आसे अपना लोग जाने पुराना गाड़ी आसे और हेतु हिखले कोनो लाभ ना एटिया EV आही आसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आही आसे तेती अपना कोर्स करिकुलम अपडेट होबो लागे जी इंस्ट्रूमेंट अपडेट होबो लागे नोटून टूल्स देबो लागे. So for updating the infrastructure, Government of India has provided financial support and lot of things are happening in Assam. And apart from that, हमारे लगा डेटा संकल्प कोरी World Bank funded project आसे. हेतु programmer पूरा we are also providing financial support to different project in Northeast. We are bringing 3 new schemes. हेतु अपने लोगों को जना बोले बिसारे शू. The one scheme is coming प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0. This scheme will target 15 to 45 years of age group. और full time classroom training होबो 2 to 6 month या training कोरा पिशत लोरा सवाले कि बा placement करन promote कोरा होबो facilitate कोरा होबो. And if they want to go for their self employment कि बा निजोर उद्यम जेटी आराम कोरी बोले जाबो, then will also support them so that they can start their own business. Idea होल कि अभी job seeker की बजाय job provider create कोरी बोलागे. So you prepare yourself to start your own business, own enterprise, own industry, so that you can provide the job rather than going for the job itself. Next scheme, अभी लो या हिसु एटो apprenticeship promotion scheme. तात training कोरा पिशत अपने लोग के विभिन्न industry apprenticeship कोरी वो पारे. This is basically earning while learning. अपनी ट्रेनिंगों कोरी था कि वो और लगट लगट अपना एटा stipend पाए. A2 स्टाइपेंड इंडस्ट्री दिबो और तात कोई 25% द टोटल स्टाइपेंड का 25% विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो यू विल लर्न, यू विल गेट ट्रेनिंग एंड along with that you will get the salary also, you will get some wages, some stipend also. Next जन शिक्षण संस्थान हमार बहुत एने आसे गाँव पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया रिमोट एरिया दो आर न्यू लिटरेट या अशिक्षित आसे या हमार बहिला बिलाक आसे दिनत काम करे हमें ना पाए त्योर कारण एटा जन शिक्षण संस्थान खोला गई से तात आबेली ड्यूरिंग ऑफ आवर्स और एज पर कन्वीनियंट ऑफ द कैंडिडेट गवर्नमेंट एटा ट्रेनिंग दिया जाए. एटू ट्रेनिंग कोरा पिशा देखा गोल कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट त्यो निजोर होरु होरु उद्यम आरंभ करी से त्यो इनकम सब्सटेंशियली बढ़ी से. सो वी आर आल्सो going to introduce this revised scheme Jan Shikshan Sansthan in the country and especially in Assam. Now a special project. This is the last slide. Akhmar karan ami ki kori bolo goyas. Eta mar Tata lagat Government of India, Assam government और Tata Stripe lagat ami eta agreement korishu और सोनापुर एटा hospitality sector एक center of excellence आरंभ करा हुई से जो training एटिया आरंभ होबो. I will request all of you, if you are interested, you can go see and even join this training program. Training कोरा पिशत जी लोरा सवाली आसे जो अभी placement व्यवस्था कराई दिया जाबो, they will get the job. Next, we have proposed to set up one national skill training institute in Assam. The proposal has been received and we are considering it, and it hun kale eta NSTI yard set up kora hobo. जेने आमी कोई इशू ओ गोटाई देखत आमी जन शिक्षण संस्थान एस्टैब्लिश करा होई आसे. Out of that 12 number of Jan Shikshan Sansthan will be established here in Assam, and in each Jan Shikshan Sansthan 1800 candidates will be trained every year. And so you can imagine that opportunity kiman ahi ase, and if whoever is interested they can come and join this training program. We are also planning to set up a drone school, drone academy in Assam to impart the training on the drone. Drone एटिया बहुत popular होई आसे. So ITIs can also consider to start the drone training. So that facility is also there. We will set up the Skill India International Center so that after the training, students and the youth from Assam can get opportunity to go out of the country and get the job in other countries. Overseas mobility ami promote korim. T workers productivity बढ़ाबो लोय आमी एटा upskilling plan लोय आही आसु, and that will be implemented to enhance the productivity effectiveness of the T workers.
Apart from that, in aspirational district, we are also considering to implement, roll out a special project, new project for the state of Assam. It ji gotai opportunity ji yahi ase that iman hubidha yat ahibo that youth will be able to choose and get themselves a skill. And with the state government, Government of India is working very closely and will create a very enabling environment so that each and every youth of the state should get the opportunity for skilling, upskilling and reskilling. Thank you very much. Thank you very, very much. You have proved that you are also the son of the soil. Thank you very much for doing this. Sri Krishna Kumar Dwivedi, Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.